Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of Daily News Analysis on official channel on PRATHAM Test Prep. So कैसे हैं आप लोग? I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. Before we start the session, I just want to know that whether my voice, if my voice is audible, am I visible to everyone? Am I audible and visible to everyone? Okay, fine. So newspaper is a good source because to covering the current affairs, that newspaper that majorly we cover the Hindu and Indian Express because it will gives you the immense idea like what things that we need to discuss on it. And what exactly we discuss in newspaper analysis? We discuss about the national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, miscellaneous, and apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, any amendment, any bills which is in the parliament. This is also we discuss in daily news analysis. And here is the quote that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. तो शुरुआत करो और क्वेश्चन ऑफ डे आज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो स्टे ट्यून, विल डिस्कस 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज़पेपर. ठीक है जी, चलो. एंड क्विक टिप्स में आज हम सीखेंगे यूएनएससी के मेंबर्स. ये क्विक टिप्स है क्या? विद द हेल्प ऑफ mnemonics वी लर्न लाइक कपल ऑफ थिंग्स in the static GK part, right? Chalo. Here is the first one is not more important exam point of view because we have already discussed about the interim budget 2024. So Nirmala Sitharaman, what she has done, interim economic survey and all. So while there has been a focus on welfare schemes which have been largely attributed to the Prime Minister. So it remains to be seen whether voters will be impressed by this or the government claims to a financial prudence. So this is everything is that it has mentioned in the budget. So here is important to know about the Nari Shakti in workforce. So female labor force participation rate, so PLFS. This PLFS data, periodic labor force survey, is released by an SSO, right? So as we can see in this data, 2017 and 18, where the women participation in the workforce were 23.3%, where we can see 2022 and 2023, 37.0%. And apart from that, for the women emancipation, government are doing lots of things like maternity benefit for 26 weeks, facilities for migrant workers, and like crashes, senior care facilities, procurement practice, and lots of things that has to be implemented by the government of India. And here is fiscal situation needs close watch, achieving a real growth of 7% that would require both state and private sector support. See, थोड़ी से हम बैकग्राउंड में देखेंगे इसमें कि 2024-2025 में vote on account, the government has confirmed its commitment to restoring fiscal consolidation. So मतलब ये हुआ कि यहाँ पे the combined and central fiscal deficit to GDP ratio had peaked at 12.5% and 9.2% respectively. So these were significantly above the FRBM fiscal deficit to GDP norms. So since then the government has successfully but incrementally reduced its fiscal deficit to GDP ratio closer to FRBM norms. So ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट की हम बात करें तो NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट फॉर 2023 या 2024 में indicates real and nominal GDP, and we had discussed couple of times about real and nominal GDP के बारे में, right? So ये हमारा कितना था? 7.3% 8.9%. So जो छोटा सा गैप है, that we can say small gap between the two growth rate is due to the unusually low implicit price deflator, which is going to be IPD. So based inflation of 1.4%. इस बजट में क्या इंडिकेट किया गया? जो आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 10.5% है.
So it has been the practice that the budget does not indicate the underlying real growth. However, the combining the budget nominal GDP growth with the real growth given by the Ministry of Finance review of Indian economy at 7% at 24 to 25 in the financial year. So it is clear that the underlying assumptions for the IPD based inflation is 3.3%. So reaching the real growth of 7% to 24 to 25, that would require investment support, दोनों से investment support from the state as well as from the center as well as. लॉन्ग टर्म में इसमें आप पूरे अगर आप देखें इसमें तो यू विल सी द डेटा एंड ऑल फैक्ट्स. सो द मेन चैलेंज दैट द इंडियन इकोनॉमी फेसेस emanates from global headwinds resulting in a negative contribution of net export of real GDP growth from 2023 and 2024. So given present trends, this adverse global situation may continue into 2024-2025, although the extent of the adverse impact may be less. So under these circumstances, the budget establishes a healthy balance of, we can say, pursuing fiscal consolidation while not compromising on growth. And it is also expected that the state government as well as private investment will also support investment growth. Now we move to the next article, भारत रत्न के बारे में. अभी रिसेंटली इस न्यूज़ से पहले बिहार के लीडर थे कर्पूरी ठाकुर जी एंड गवर्नमेंट अनाउंस द भारत रत्न. And now the government announced the Bharat Ratna for Lalakrishna Advani. BJP's poll message clear: social justice, Hindutva. It was in 1989 that the Bharatiya Janata Party under Lalakrishna Advani had taken a decisive ideological stance, giving up Gandhian socialism as a motto that Atal Bihari Vajpayee had been promoting. The party supported Ram Janmabhoomi of the RSS and VHP through the पालमपुर resolution. और ये पालमपुर resolution 1989 की बात कर रहा हूँ मैं आपको. That is पालमपुर resolution 1989, which called for the site to be handed over the Hindus either through a negotiated process or legislation. तो the very first thing that you should know about the भारत रत्न and इंडिया की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होती है वो होती है भारत रत्न. ये सिंबलिक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम में इसके सिंबल्स पूछते हैं कि इस पर कौन सा ट्री होता है. तो ये जो है पीपल ट्री का ये इसमें बैनियन ट्री नहीं होती. इस बार आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे. उसके बाद पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री. पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण. सब में देखो तो आपको कलर का डिफरेंस मिलेगा थोड़ा बहुत. ये देखो हिंदी में लिखी होती है पद्मा अवार्ड्स, 3 पद्मा अवार्ड्स होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. और भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. किस द वेरी फर्स्ट टाइम किसको मिली थी? भारत रत्न. देखो सो नेम ऑफ द अवार्ड, सारे अवार्डी के नाम आपको मैंने नहीं शो किए हैं. श्री राजा गोपालचारी, ये हमारे इंडिया के द फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर. वंस वी गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, उसके बाद भी हमारे इंडिया में गवर्नर जनरल थे. ठीक है, बिकॉज 1951 से 52 में इलेक्शंस हुए हैं. ठीक है, तो almost we took 3 years to conduct election in our country. So obvious that country को चलाने के लिए हमारे पास लोग चाहिए. और हमारे once we got independent, after the Lord Mountbatten came to our country and passed Indian Independence Act in 1947, where India would be divided into 2 parts, India and Pakistan, and Punjab will be divided into 2 parts, East Punjab and West Punjab, and Bengal will be partitioned, East Bengal and West Bengal. सो सी राधा गोपालचारी को 1954 मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी सेम ईयर में, एंड डॉक्टर सीवी रमन 1954. तो ये तीनों जो यहाँ पे हैं रेसिपिएंट्स हु गॉट द नोबेल प्राइज, सॉरी भारत रत्न, सी राधा गोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन. इनके बर्थडे पे हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. एंड सीवी रमन को रिलेटेड है नेशनल साइंस डे से. कोई कमेंट सेक्शन बताओ हाउ सीवी रमन इज रिलेटेड टू द नेशनल साइंस डे. कैसे नेशनल साइंस डे? देखो अभी बजट अनाउंस हुई है तो उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे. राइट, चलो
देखते हैं इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें। और बजट के सेशन के ऊपर डिटेल वर्जन ऑफ द बजट, इंटरिम बजट 2023 एंड 2024, वो मैंने आपको 2024-2025 में वो आप जाके प्रथम टेस्ट प्रेप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हाफ एन आवर से ज़्यादा का सेशन है, नॉट टॉकिंग अबाउट द आवर्स, इट अबाउट द कंसेप्ट। उसमें सारी चीज़ें हम डिटेल में पूरी बजट के बारे में डिस्कशन की हुई है। प्लीज़ जाओ, देखो, समझो क्या चीज़ें हैं। चलो, सो ये जो ग्राफिक्स है दैट शो द सेक्टर वाइज बजट एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड द bigger the rectangle, the higher the proposed spending in the financial year 2025. अगर आप देखें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट किसके ऊपर एक्सपेंडिचर खर्च कर रही है, वो है हमारा डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे आप देख सकते हो 4,54,773 करोड़ रुपीज़ खर्च कर रही है ट्रांसपोर्ट टू स्टेट, रूरल डेवलपमेंट। अब आप बात करेंगे फूड पे, एग्रीकल्चर पे, आईटी पे, होम अफेयर्स पे, एजुकेशन पे गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। 1,24,638 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट खर्च कर रही है एजुकेशन के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो खर्च होती हैं गवर्नमेंट को वो है हमारा डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट एंड पेंशन। सोशल वेलफेयर पे आप देखो तो बहुत कम है, 56,501 करोड़। साइंटिफिक डिपार्टमेंट में 32,000, पेट्रोलियम पे 11,925 करोड़ एंड प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स पे 6,291 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट खर्च कर दिया, राइट। तो ये चीज़ जानी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को आता है वो 11,90,440 करोड़ रुपीज़ का। Why is fiscal consolidation is so important? What was the fiscal deficit estimates announced in the recent union budget considered to the ambitious? The very first question that you should know. Second one, how does government fund its expenditure? The second question. And what is the difference between fiscal deficit and national debt? How much the center expected to borrow from the market? ये जानना important है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी है निर्मला सीतारमण जी announced during her budget speech that the center would reduce its fiscal deficit to 5.1%. 5.1% of gross domestic product in 2024-2025. So she further added the fiscal deficit would be pared to below 4.5% of GDP by 2025 and 2026 में। ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखो आम भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट क्या होती है। ठीक, फिस्कल डेफिसिट जो होती है द शॉर्ट फॉल इन ए गवर्नमेंट रेवेन्यू व्हेन कंपेयर टू इट्स एक्सपेंडिचर। इसको ऐसे समझो, आप 5 रुपये कमाते हो और आपने 10 रुपये का लोन लिया हुआ है, ठीक है, आपकी कहते हैं ना आमदनी 98 खर्चा रुपया, वही वाला सीन यहाँ पे है। मतलब आपकी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कमाते कम हो, खर्च ज़्यादा करते हो, तो आपके ऊपर क्या होगा? नुकसान होगा। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही सिंपल सा होता है, इट अ शॉर्टफॉल इन अ गवर्नमेंट रेवेन्यू व्हेन कंपेयर टू इट्स एक्सपेंडिचर। सो आपने देखा कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा खर्च करती है इंटरेस्ट पे, राइट। सो व्हेन अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड इट्स रेवेन्यू द गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो मनी टू सेल एसेट्स टू फंड द डेफिसिट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, मतलब स्टेक दे देना अपना किसी और को, राइट। अपना एसेट्स को बेचती है फिर वो गवर्नमेंट उसको बैलेंस करने के। उसको ऐसे समझो, आपके पास 100 रुपये हैं और आपने 5 लाख रुपये ले लिए, ठीक है, और आपको पता है सोर्स ऑफ इनकम आपका है नहीं। आपके पास 2 ही चीज़ें हैं, जो घर की आपकी ज्वेलरी होंगी, जो घर के आपके सामान होंगे, जो बैंक बैलेंस होगा, उसको आप निकालना शुरू करो, मतलब अपनी संपत्ति बेचोगे। सिमिलरली इसको ऐसे समझो, आप जो घर की संपत्ति है गवर्नमेंट की वो उसे बेचना शुरू कर देती है, राइट। सो सिमिलरली उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए। सो टैक्सेस आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। 2024 and 2025 में अगर आप जानने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट टैक्स रिसीट आर एक्सपेक्टेड टू बी 26.2 लाख करोड़ while total revenue it's estimated to be 30 lakh crore.
So the union government total expenditure on the other hand is estimated to 47,066 lakh crore. So when a government runs a fiscal surplus, on the other hand, its revenue exceed expenditure. So it is, however, quite rare for the government to run a surplus. Most of the government today focused on keeping the fiscal deficit under control rather than on generating a fiscal surplus or balancing the budget. So fiscal deficit should not be confused with the national debt. The national debt is the total amount of money that the government of a country owes to lends at particular point of time. दूसरा सवाल ये आता है कि how does the government fund its fiscal deficit? So in order to fund to fiscal deficit, government mainly borrow money from the bond market. और bond market से कैसे? Government bond issue करती है. Bond एक type of paper होता है my friends, उसको government बेचती है. देखो ऐसे समझो, मेरी कंपनी है ABC कंपनी, ठीक है, मेरे कोई नहीं जानता, मैंने अपना बॉन्ड इशू किया, कोई नहीं लेगा इसे. जब सरकार का सपोर्ट होगा, गवर्नमेंट इसके हमारे पास आएगी, गवर्नमेंट अगर वहाँ पे मेंशन करेगी सपोज SBI या किसी और बैंक के साथ मिलके मैंने इसको रिलीज़ किया गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे लोगों में ट्रस्ट होता है कि गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उसे खरीदना लोग प्रेफर करते हैं. सो बॉन्ड मार्केट जब लेंडर्स compete करता है to lend to the government by purchasing the bond issued by the government. 2024-25 में Central is expected to borrow a gross amount of 14.13 lakh crore from the market, which is lower than its borrowing goals from 2023 and 2024. So as it is expected to fund the spending of 2024-25 through higher GST collections. So government bonds are generally considered to the risk-free, as the government can, under the worst case scenario, get help from the central bank, which can create the currency to pay of the lenders. तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए. Now we move to the next one. Test tube rhinos, why rebuilding doomed species a desperate race against time. So the death of the last male in 2018 made the extinction of northern white rhino in inevitability, but already 2015 में यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी, आपको पता होगा यहाँ पे जो आपका IVF होता है, which is in vitro fertilization. So last week the scientists announced the first ever rhino pregnancy achieved by transferring lab-made rhino embryo into a surrogate mother. So it took 13 attempts for the breakthrough with a southern white rhino. तो ये process is important, ये क्या है नहीं and all not much more important. चलो अब हम क्विक टिप्स पे डिस्कस करेंगे. और क्विक टिप्स क्या है आज का? परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC. UNSC मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स. और उसको लर्न करने के लिए फ्रेज वर्ड इज इंपॉर्टेंट. F स्टैंड फॉर फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना एंड इंग्लैंड. इस वर्ड से आप लर्न कर सकते हो. फ्रेज फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना एंड इंग्लैंड. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UN, यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फेसर से लर्न करो. फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन एंड स्पेनिश. और दिल्ली सल्तनत के जितने भी डायनास्टी थी, हाउ डू वी लर्न? सब खाओ टमाटर और सब लो मज़े. देखो यहाँ पे एक पोस्टर मैंने लगाई है, टमाटर खाओ. तो सब खाओ टमाटर. S स्टैंड फॉर स्लेव, K फॉर खिलजी, T फॉर तुगलक, S फॉर सैयद एंड L फॉर लोधी एंड M फॉर मुगल्स. ये एक क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस है विच नीड टू बी अंडरस्टैंड. बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए. देखो जो स्टैटिक टॉपिक होते हैं उसके नोट्स आप इस टाइप से बना सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया. इंडियन पॉलिटी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पहले आर्टिकल 15 लिए हमने यहाँ पे. डिस्क्रिमिनेशन विच टॉक्स अबाउट. आर्टिकल 17 विच टॉक अबाउट अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आर्टिकल 124 टॉकिंग अबाउट सुप्रीम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 214 टॉकिंग अबाउट हाई कोर्ट. और ये 51A है हमारा, टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज. 343, 351 टॉकिंग अबाउट हिंदी लैंग्वेज. आर्टिकल 24 टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स कैन नॉट वर्क. और इमरजेंसी के लिए 3 आर्टिकल हैं. 352,
356 and 360. 352 talking about national emergency, 356 talking about state emergency, and Article 360 talking about finance emergency के बारे में. Now it's time to questions of the day. पहला क्वेश्चन देखो. Exercise Desert Night is conducted by the Indian Navy, Indian Army, Indian Air Force, Indian Coast Guard, the Indian Air Force. Exercise Desert Night जो है Indian Air Force conduct करती है along with the French Air and Space Force and UAE forces. तीन इसमें होता है French and UAE. Purpose क्या है? Conduct joint military exercise है. Corruption Perception Index is released by Economist Intelligence Unit, Oxfam International, Transparency International, United Nations Office on Drugs and Crime. और ये रिलीज करती है C1 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, रिलीज करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. तो जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है दैट इवैल्यूएट्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर perceived level of public sector corruption using a scale from 0 to 100. Highly corrupt to 100, very clean. Now consider the following statement about annual financial statement. The annual financial statement is divided into three parts: consolidated fund, contingency fund and public account. ठीक है. So PC learn करो, PC score. तो public account, contingency fund and consolidated fund. All revenue raised by government, money borrowed and received from loans given by the government flow into the consolidated fund of India. Article 112 of the Constitution requires to government to present a parliament a statement of the estimated receipt and expenditure in respect to every financial year. Yes, ये सारे हमारे सही हैं इसमें. Shekhari and Bhumija. So Shekhari and Bhumija are the terms associated with. Once we talk about the Shri Ram Mandir in Ayodhya, so it has been built by the Nagara style. एक architecture का design है वो, और उन्हीं में आता है आपका Shekhari and Bhumija. So it is a modes of temple architecture. So there is a large variation when it comes to what a shikhar जो भवन के पास होता है of look likes. Now how it is used in a temple's design. So on this basis, Hardy defines 5 modes of Nagara temple architectures: Vallabhi, Famasna, Latina, Shekhari and Bhumija. And here we reach the last questions. Following had first deciphered the edicts of Emperor Ashoka: George Bilher, James Prinsep, Max Muller and William Jones. The right answer is here James Prinsep. अशोका जो थे वो 269 से 232 BC के बीच में था. ही वॉज अ सन ऑफ बिंदुसार. तो मौर्य एम्पायर था, उसमें मौर्याज के में जो था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद बिंदुसार का हमारा बेटा था अशोका. So his other names was Devnampiya and Piyadasi. He was crowned to the throne in 269 BC and he was famous for the Battle of Kalinga, which is present day in Odisha, fought in 261 BC. And James Prinsep was the first to decipher Ashoka edicts inscriptions in 1837. So this is all about the session, dear students. My friends, this is important to know about the things. जब भी आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, things about the historical background, what are the important takeaways that you should know about it, and make a very short and crisp note so that at the time of your exam, it would be able for you to devise all the content, right? Stay tuned. We'll meet you for tomorrow for the same time. Thank you so much for joining with this beautiful session on Pratham Test Prep YouTube channel. Make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Stay tuned. Bye-bye and take care.